Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. As we live in this world and the numbers increase of human beings, there are bound to be some people who are and who become leaders, and others who are led in religious terms, in political terms as well. So now, as you see in whole of the world, there are governments, there are leaders, political leaders who lead people, and some actually are good, some are not. In relation to that, the Prophet ﷺ gave guidance that how we should actually react to political change and leaders, what should be our approach. Because everywhere we live, obviously there will be some, be it a tribe, be it a country, leaders, what should we do and what should be our approach. Especially people at the time of elections in different countries, be it Muslim countries, other countries, they ask certain questions that who shall we support and who shall we party, and sometimes people do party with such a party which they know they are not doing something which is right, but they still tend to support them because it's their party. In Muslim countries you see this, in non-Muslim countries you see this. And sometimes they know the other person is right and they don't want to support him because he's not amongst their party or their tribe or things. Now, in relation to that, like Prophet ﷺ gave guidance on all matters until Day of Judgment, and this is very, very important matter, the who shall we vote, who shall we follow, what should we do when we go into live in a country, Muslim or non-Muslim, and what should the common man do, what should he do when the elections come, or even if they're not elections, what should he do. Prophet ﷺ gave guidance even when a baby is born, until you place the baby in the mother's lap and what to do, and until the death and how to place that body into the grave, which way the face, which way the side of the body should be. He gave guidance actually to such detail. So now what to say about political jamaats and political groups and leaders. So in one hadith, the Prophet ﷺ made it clear for everyone what to do, what's the right thing to do, and what will be the result, and what's the wrong thing to do, and what will be the outcome. So guidance upon the ummah until the coming of Imam Mahdi and Dajjal and others, that what should a person be doing. So he alayhi salatu wasalam, one of the Sahabi radiallahu anhu mentioned, Imam Nisa'i mentioned this hadith with a sound chain, sahih chain of narration. He said, an Ka'b, from the Sahabi radiallahu anhu, Ka'b bin Ujra, قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9
Once Prophet Islam came and we were sitting in a group, we were 9 people sitting and the Prophet Islam came. And at that time, he alayhi salatu wasalam gave that guidance until Day of Judgment, what to do in relation to leader, political leadership or other leadership. What should a person do? यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक के उम्मतियों के लिए ये रहनुमाई छोड़ दी कि सियासी मामले में क्या करना है. मुख्तलिफ लोग आएंगे तो आपने क्या करा, अपनी उम्मत को बता गए. उनको तो सब फितनों का इल्म था क्या होने वाला है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया. Very clear cut terms he mentioned कि that what should be the political stance, कि सियासी नज़रिया उम्मती का क्या होना चाहिए. कि जिस पार्टी के पीछे हमने जी फलाने ने हमने वोट देना है, वो हमारी गली बनवा देगा, वो मुझे जाप देगा, इस वजह से सपोर्ट करना चाहिए, ये नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, या कुछ और जैसे हमारे लोग करते हैं. सही अलैहि साहबी फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने हम पर शफ़क़त फरमाई. हम 9 बंदे बैठे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु सतकूनु बअदी उमरा. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam came to us while we were a group of 9, and he said, verily there will be rulers, meaning tyrannical rulers, oppressor rulers, who are not upholding justice. He said, after me there will be rulers coming who will not be ruling with justice, and they will not be good people. So he said, what should you do and what should you not? Man saddaqahum bikazibihim. He alayhi salatu wasalam mentioned that whoever affirm their falsehood and lies, for example, as you are with a leader, whoever is Muslim or non-Muslim, but he is lying on these matters, he's not truthful. So he sallallahu alaihi wasallam said, if you actually say, oh, because I am from that party or what, no, he's not telling the truth, he's lying. But you say, yeah, he's fine, yeah, he's saying right, he's fine. यानी फरमाया कि वो झूठ बोल रहे होंगे, दावे कर रहे होंगे, हम ये कर दें, वो कर देंगे, और आप जो है उनकी तस्दीक कर, उनको पता है ये झूठ का पलंदा है सारा, लेकिन आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, कर देगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपकी पार्टी का लीडर है. وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ. And secondly, this person will also support their decisions even though they are based on oppression and zulm. But they say, oh yeah, it is a political decision, they have to go to war, they have to do this now, or they take this action for people, but this action is wrong. But you say, because it's my leader, my party, I'm going to support it. وَأَعَانَهُمْ. फरमाया कि वो आपका हुक्मरान है, लीडर है, MP है, MNA है, जो भी है, वो किसी पर ज्यादती करने वाला है या जुल्म कर रहा है, गलत कर रहा है, और आप भी कहते हैं बरादरी का मसला है, पार्टी का मसला है, हम तो इसके पीछे खड़े हैं, उसके जुल्म पर भी आप उसके पीछे खड़े हैं, आप कहते हैं ठीक है, जो खामोश है. So you've chosen your leaders. आपने अपना चुन लिया, ये मेरा रहनुमा होगा, मैं तो इसकी मदद करनी, इस पार्टी को वोट देना है. फिर जैसे आप टीवी पे देखते हैं ये जो तजज़िया नगार, these people who are analyzing or these actually people who come on, if they're going to, by hook or crook, they support what their own party. No matter they're wrong, right, they're not concerned. They are going to blindly, yes, justify what is their party saying, what is their leader saying. That's what they're going to do. So the Prophet of Islam gave clear-cut guidance on politically. What should Muslim do politically? What should the Ummati do politically? He said, yes, leaders, yeah, he didn't even mention this, Muslim or non-Muslim. You testify, you support their lives, and if they do something wrong, your vote is with them, your support is with them. He said, فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.
Anyone who does this has nothing to do with me. He is not with me. And I have nothing to do with him. فَلَيْسَ مِنِّي. He is not from me, he has nothing to do with me. And I have nothing to do with him. He's chosen his leaders, his party. He's left Muhammad Rasulullah and truthfulness. So he's traded his leader, or he at the expense of the leader of the prophets. फरमाया जो बंदा सियासी बात का सियासी मामले में भी जुल्म की झूठ की साथ देगा तो ठीक है, वो दे ले साथ, उसने अपना लीडर फलाना बंदा फलानी औरत ये मेरी पार्टी है, मेरा फलानी पार्टी है, इसमें कोई पार्टी शार्टी की बात नहीं, इसमें जुल्म और झूठ की बात हो रही है। फरमाया उसने उसी को सपोर्ट किया तो ठीक है, मेरी बजाय उसने अपना रहनुमा चुन लिया, मेरे साथ उसका कोई तल्लक नहीं, वो ना उसका मेरे साथ कोई तल्लक है, ना मैं उसका नबी ना वो मेरा उम्मती। ठीक है, यही इसकी शफाअत भी करेगा और यही सब कुछ इसके लिए करेगा। हमारे लोगों ने मजाक समझा हुआ है, वो समझते हैं जी सियासी मसला है, कर दो जो कुछ करना है, दे दो जो कुछ देना है, ये तो सियासी इशू है। जुल्म सियासी इशू नहीं है, झूठ सियासी इशू नहीं होता। ये गलत चीज़ें हैं, जहाँ भी हों गलत हैं, सियासत हो, दीन हो, पैसे का मामला हो। आप चावल बेच रहे हैं तो झूठ बोलना जायज़ हो जाएगा, भी चावल बेच रहे हैं। आप नमक बेच रहे हैं तो किसी से ज्यादती करना ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तो जी नमक का मसला है, ये तो चावलों का मसला है। ये बात नहीं है। तो मुल्क का मसला हो, इंसाफ का मसला हो, चले ईमान कुफर तो नबी अलैहिस्सलाम उसकी बात नहीं कर रहे। पहले तो फरमाया ये जुल्म और ये करना, तो ये सारे फॉर ऑल पीपल, फॉर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, दिस गाइडेंस इन देयर। So he alayhi salatu wasalam mentioning whoever will support their lives and also support their wrongdoing and some actions they take, they have nothing to do with me and I have nothing to do with them, nor I am their prophet, nor they are my ummati. They have chosen, instead of me, they've chosen someone else to be their guide and leader. وَلَسْتُ مِنْ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْزِ. And he will not appear and he will not drink with me, from me, at the fountain of paradise called Kausar. He will not be allowed. I would not be entertaining him there at all. A person who supports oppression upon my ummah, upon people and zulm. तो फरमाया तीसरी बात ये, क़यामत के दिन सबसे बड़ी उम्मीद नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत होगी, अल्लाह की रहमत होगी, हौज़ कौसर पर जाना होगा। फरमाया मत वो आए हौज़ पर, ना ही मेरे साथ मैं कुछ उसको दूंगा, ना ही हौज़ का पानी, ना ही शफाअत का पानी। अब इससे बड़ा देखें क्या नुकसान है मुसलमान। हम समझते जी सियासी मसला कोई नहीं, ये है इसको सपोर्ट कर लो, नहीं, जो भी है काफिर है फिर भी झूठ को मत सपोर्ट करो। मुसलमान है उसके भी झूठ को मत सपोर्ट करो, उसके भी वो भी जुल्म करे तो उसको सपोर्ट मत करो। So he alayhi salatu wasalam mentioned then, وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي. And he said that if anyone finds himself in a situation, he's in a place, he doesn't know who is actually, but in his judgment, whoever knows in his judgment what's truth, what's wrong, so whoever does not testify, affirm their lies and does not support their oppression, nor he says everything they are saying is right even though he knows it's wrong, nor even if it is own party or own leader, if they are doing wrong, they are oppressing, they are doing something unjust, he doesn't support them. He said, yes, you are my political, but I don't support
injustice. I don't support zulm. I don't support lies. फरमाया और जो जिस मुल्क में भी मसलन रह रहा है लेकिन वो अपने लीडर जो भी फॉलो कर रहा है वो सियासी उसके झूठों की तस्दीक नहीं करता, उस जुल्म पर उसकी मदद नहीं करता, वो कहता है ठीक है जी आप मेरे पार्टी है लेकिन मैं इस मामले में आपके साथ नहीं हूँ। फरमाया फ़हुवा मिन्नी व अना मिन्हु, वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। व अना मिन्हु, वो मुझसे है, वो यानी ही इज़ फ्रॉम मी, he is part of me and I am from him. And I am his prophet. I'm happy as being his prophet, and also I'm happy he being my ummati. मैं खुश हूँ उसके नबी होने पर और उसके उम्मती होने पर। वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। क्यों? वो जहाँ भी है, जिस पार्टी से भी, जिस मुल्क में भी, जिस ट्राइब में, ये फैमिली मैटर भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे यहाँ जी बरादरी है, उन्हें ना साथ देना ही पड़ेगा, ये जी ये है, ये मसला है। जिस मामले में भी लीडर हो, बी इट फैमिली लीडर, ट्राइबल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, वर्ल्ड लीडर, तो फरमाया ही वहुवा वारिदुन अलैया हाउस and he will drink with me at the fountain of paradise. He will come and I will bless him with the house, with the drink of Kausar and with Shafa. फरमाया वो आए क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर वारिद हो, उसको हौज़े कौसर का शरबत भी मिलेगा और मेरी शफात भी मिलेगी। तो ये हदीस ख़त्म हो जाती है यहाँ। तो गोया समरी ये है कि जो जहाँ भी आप रह रहे हो, पाकिस्तान में हो, यूके में हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि कोई जालिम जमात है, जालिम लीडर है, उसको फॉलो सपोर्ट ना करें, उसके झूठों की खामखा उसके वकील ना बने आप पार्टी के। अगर वो आपको पता है वो गलत है, अगर करोगे तो तुमने मेरी बजाय उनको लीडर मान लिया, उनकी बातों पे चल रहे हो, तो मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं, तो और ना तुम्हारा मेरे साथ कोई तल्लक है। तूने नबी अलैहिस्सलाम की बजाय इनके पीछे चलना शुरू हो गया। और फरमाया ना ही वो हौज़े कौसर पर आए, और जो फरमाया कि इनके झूठ की तस्दीक ना करे, ना ही जुल्म पर मदद करे। ठीक है सियासत में वो है, लेकिन वो हर मामले में इंसाफ के पीछे चलता है, झूठ के पीछे नहीं चलता, सपोर्ट भी नहीं करता। तो फरमाया वो मेरा है, मैं उसका हूँ, और हौज़े कौसर पर आएगा तो वो मुझे पाएगा शफ़क़त करने वाला, रहमत करने वाला। ये इमाम महदी कि आने तक यही दज्जाल और इमाम महदी। बाय द वे आई नॉर्मली से कि ये जो लोग बड़े पूछते रहते हैं क्वेश्चन, व्हेन इज़ इमाम महदी कमिंग, ये इमाम महदी कब आएंगे, वो क्या करेंगे। आप और मैंने क्या तीर मारने हैं जो पूछ रहे हैं जी इमाम महदी कब आएंगे। आपकी मस्जिद का इमाम रोज़ाना आपका 5 वक्त इंतज़ार करता है, उसके लिए तो आप आते नहीं जो अल्लाह की तरफ से नमाज का हुक्म है। और इमाम महदी के बारे में ये बच्चे भी जवान भी पूछे कब आएंगे कब आएंगे, जैसे आपने भाई उनका साथ देना है। वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि उनका साथ भी चंद 100 लोग देंगे, हज़ारों या लाखों बिलियंस नहीं देंगे। ये वैसे बातें करने के लिए सिर्फ हैं। तो अगर वाकई आप सीरियस हैं इमाम महदी के बारे में, तो जो इमाम मस्जिद का 5 टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है, फजर को बैठा है, तो वो तो अल्लाह के हुक्म है। इमाम महदी के पीछे चलना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं। कुछ उम्मत चल गई तो बस फ़र्ज़ कफ़ाया अदा हो गया, आधी उम्मत चल गई। लेकिन मस्जिद में आना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, ये तो हर एक ने ज़िम्मेदारी। तो इसके पीछे नहीं चल रहे। सो दोज़ पीपल हु आर वेटिंग फॉर इमाम महदी, दैट इज़ गुड, बट दे शुड नो द इमाम ऑफ देयर मस्जिद वेट्स फॉर देम 5 times a day to come on the command of Allah. So if they are not coming there, they would not say labbaik to the call of Imam Mahdi as well. That is why the Prophet ﷺ said only few hundred people will follow him, and there will be billions of people, Muslims, there at that time. So consider and reflect and try to bring this change in you, so that if we die at any time now, so we may have hope actually from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala.
अल्लाह पाक मुझे भी आपको तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला